बच्चों, तो आज हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना इन सिंगल स्टेप। ध्यान से देखना सारी कैलकुलेशन। अब हमें क्वेश्चन दिया है 2 1/3 प्लस 1 2/5। फर्स्ट स्टेप इज ऐड द होल नंबर्स। 2 + 1 gives us 3. Now you can see here our denominators are co-prime numbers, और हमने सीखा है को-प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो 3 × 5 gives us 15. I have written here. Now, what is the next step? See, now we have to cross multiply. What is the meaning of cross multiply here? You have to multiply this denominator by this numerator and this denominator by this numerator. 1 into 5 gives us 5 and 3 into 2 gives us 6. Now we will add these two. 5 plus 6 gives us 11. So here is our answer. है ना, ये बहुत ही मैजिकल तरीका। आओ अब एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूं। Suppose we are given with 3 4/5 and here we are given with 2 1/7. Now see, these are also, here the denominators are also co-prime numbers. So we have to use the same method. सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will add the whole numbers. 3 plus 2 gives us 5. Now what will be the LCM here? It will be the product of 5 and 7. So 5 times 7 gives us 35. Now what we have to do? We have to cross multiply. So firstly we will multiply 4 and 7. It gives us 28. Now we will multiply 5 and 1. It will gives us 5. तो 28 और 5 को हम प्लस कर देंगे, वो हो गया 33। तो ये आ गया हमारा सिंगल स्टेप में आंसर। देखो कितना आसान है इसे करना। इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूं आपके लिए बहुत सारी ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स।